Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Anthropology 360 Degrees, which is a complete lecture series on anthropology. Last time we completed a separate topic. Now, from today, I mentioned it in the previous lecture also that जो असली anthropology है ना, it'll start from now. Why I say this? Because from now onwards, we'll start with a new branch of anthropology, that is physical anthropology. Right, it is written here. You can write it physical or biological anthropology. Okay. So, to be very precise here, let me mention one thing. I'll go very slow with physical anthropology because I know most of you people might belong to the arts background and are unfamiliar with biology as a subject. You might have done till your basic education, that is till class 10th, but after 10th you might have chosen different streams and you might have been detached from basic biology. So with this portion of anthropology, I'll go very slow, but as I myself belong to physics background, so I am completely alienated. I was also completely alienated with this branch of anthropology, but with time, I gave this subject a bit of time, a bit of energy. So I was able to get through all the topics, and I'll make sure if I, from a non-medical background, was able to do a subject which belongs to, whose portion belongs to medical background. So I hope that I'll reach up to your expectations and make you understand each and every topic of this. I'll go very slow. I'll go topic wise topic. एक एक टॉपिक करके हम will sail through physical anthropology और जो भी sections इस section में आपका doubt होंगे I'll please write down in the comment section and we'll begin with that. So to begin with, I'll begin with the word evolution. बहुत important word है. एक इसका जो anthropological language, what I say, it is quite different. I'll go with a very basic concept because evolution as a word, you must know what it is. Evolution अगर मैं आपको बोलूं, आप क्या समझ सकते हैं इस वर्ड से, evolution से? If I say so, I'll give you a very basic example. Let us suppose I was in class nursery. Okay. In class nursery, I was able to solve the problems which were apt according to that level. I grew up. With time, my brain evolved. What I used the word? My brain evolved. Evolved in the sense that it grew intelligent. It grew in a sense that I was able to comprehend the level of class 10th when I reached class 10th. तो मैंने क्या किया, जैसे मैं बड़ी हुई मेरा ब्रेन भी डेवलप होने लगा, मेरा ब्रेन इवॉल्व होने लगा विद टाइम एंड आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड द लेवल 10th. मुझे 10th का लेवल तो आएगा ही आएगा, बट आई वाज एबल टू इवन सॉल्व द questions of previous classes also. So my brain grew, my brain evolved with time. इसे बोलेंगे कि मेरे ब्रेन ने इवॉल्व किया, एवोल्यूशन हुआ मेरे ब्रेन का. दिस वॉज क्वाइट सिंपल एग्जाम्पल, एक लेमन लैंग्वेज में मैंने समझाया. इफ आई से सो, अगर मैं आपको दूं जो हमारे ancestors थे, quite I'm talking about very long, if I trace back way back, ancestors were quadrupedal. Quadrupedal मतलब चार टांगों पे चलते थे. Okay. Now, if I see ourselves, we are bipedal. Bipedal in the sense we walk on two legs. In a sense, we evolved. हमने evolve किया 4 to 2.
Okay, this is evolution. Evolution in basic sense means what are the changes which were brought. Okay, evolution, if I say, it is a gradual change, it is a transformation from one structure to another. In very layman language, I'm saying. Herbert Spencer ने अपनी now let me come to the anthropological language. Okay, क्योंकि अगर पेपर हमने क्लियर करना है, I can't give the example of a class nursery and class 10th. I have to write in a language which is suited for the subject. Okay, so the best, I'll give you the best notes possible. You just go through it. हमने start करनी है with the definition of Herbert Spencer in his book Principles of Sociology. Okay, इन्होंने first time word evolution लाया. Okay, evolution का मतलब, if I trace back to Latin, it means evolvo. Evolvo means to evolve, to roll out, unrolling. Getting my point? I'm going very slow. If I go with the definition again, it is a gradual change. As I said, मैं class nursery में थी, class 10th में गई. एकदम थोड़ी ना गई. It took me a lot of time. It took a lot of effort. It took my brain to develop. It took my body to develop. Right? My body transformed. But it was a sort of gradual change. Overnight, I did not have the great cognitive ability that I'll be able to solve class 10th problems. With time, it took. With time, it took the shape which it is now, right? तो gradual change है. Transformation है कहाँ? एक structure से दूसरे structure. Okay? I hope it is clear to you. अब ये तो basic definition आ गई. If in exam it comes like define evolution and biological और cultural evolution में जो भी interdependence है वो बताएं. How would you define evolution? You'll write as per Herbert Spencer. Evolution is indefinite movement to definite, incoherent to coherent, homogeneity to heterogeneity. Heterogeneity means bringing variety. Indefinite मतलब हमें चीजें क्लियर नहीं थी, फिर चीजें क्लियर होने लगी. See, coherent और incoherent भी one and the same thing. Homogeneity means from simple we went to a bit complex. This is evolution. Getting my point? अब दूसरे स्कॉलर हैं. मुझे जूलियन हक्सले सर की जो डेफिनेशन है, आई फाउंड इट मोर फैसिनेटिंग. यू विल सी व्हाई. Evolution is directional. It means it is happening in a direction. It is irreversible. Very, very, very important point. It is irreversible. Why he said it is irreversible? I'll give you the example. Let us take the similar example which I gave you earlier of myself when I was in class nursery and when I went to class 10th. My brain developed, right? From a nursery class brain, it developed into a 10th class one. अब क्या ऐसा हो सकता है कि मेरा जो ब्रेन में जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं वो वापस नर्सरी क्लास लेवल पे आ जाएं? इट इज नॉट पॉसिबल, राइट? बिकॉज आई इवॉल्व इन अ सर्टेन डायरेक्शन एंड वो वापस उस चेंज में आना विच इज to the class nursery one, it is quite tough, right? So it is irreversible. यानी कि वो चीज रिवर्स नहीं हो सकती और वैरायटी इंक्रीज होगी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वैरायटी कैसे आती है? बड़े बड़े विल इन लेटर लेक्चर्स विल लर्न अबाउट genetic drift. We'll learn about inbreeding. Hybridization we'll learn about. It brings a sort of variety in the species.
Diversity, see again, diversity will increase with evolution. Now, to give a very simple crux of how I'll define, Herbert Spencer in his book Principles of Sociology gave the word evolution for the very first time. It is derived from the Latin word evolvo, which means to roll out. Okay, and it is a gradual transformation from one structure to another, in from one form to another. Herbert स्पेंसर जी की डेफिनेशन देंगे एंड जूलियन हक्सले जी की डेफिनेशन हम देंगे. So guys, बायोकल्चरल एवोल्यूशन को मैं एक्सप्लेन करूंगी. व्हाट इज बायोकल्चरल एवोल्यूशन? ठीक है, द वर्ड इटसेल्फ डिस्क्राइब्स व्हाट इज बायोकल्चरल एवोल्यूशन, यानी कि बायोलॉजिकली और कल्चरली क्या एवोल्यूशन आ रहे हैं, हमने वो स्टडी करना है. दैट मीन्स बायोलॉजिकल चेंजेस ट्रिगरिंग कल्चरल जेनेसिस, और कैसे कल्चरल के ओरिजिन से बायोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, राइट? यानी कि लेट मी गिव अ वेरी सिंपल एग्जांपल रिलेटेड टू इट. सपोज पहले हम 4 टांगों पे चलते थे. ओके, हमने इवॉल्व किया, हम 2 टांगों पे आ गए. उससे क्या हुआ? मेरे हाथ फ्री हो गए. हाथ फ्री होने से क्या हुआ? मेरे पास एक्स्ट्रा काम करने के लिए आई गॉट 2 limbs, right? Which I was not able to do when I had all the 4 limbs which were used for walking. Clear? So, when my hands got free, I was able to use that hand for making tools. जब मैंने tools बनाए, उससे क्या हुआ? Tools are a major source for bringing, it was used for various purposes like killing the animals, for agriculture. ठीक है, उससे क्या चेंज आया? कल्चरल चेंजेस आने लगे. कैसे? हम एग्रेरियन सोसाइटी बन गए, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कल्चरल चेंज क्या आया, राइट? अब जब मेरे हाथ फ्री हुए, आई वॉज एबल टू बर्न फायर, आई वॉज एबल टू इग्नाइट फायर. उससे कल्चरल चेंज आ गया कि आग, भाई हमने आग जला ली. अब जब आग जला ली, कल्चरल चेंज आ गया, आग जलाई. आग जलाने से क्या हुआ? नाउ विद एडवेंट ऑफ फायर, I was able to cook the food which I previously used to eat raw. Getting my point? पहले मैं जो पका हुआ कच्चा खाना जो मैं पहले कच्चा खाती थी, अब मैं उसे पका रही हूँ. पकाने से क्या हुआ? जो मेरे डेंटल आर्केड है उसमें चेंजेस आने लगे, राइट? यानी कि आग was a cultural factor which brought again a biological change, that is the change in dental arcade. Getting my point? वही बात हो गई. बायोलॉजिकल चेंज क्या था? बाइपेडलिज्म. उससे क्या आने लगे? टूल्स बनने लगे. दैट इज अ कल्चरल जेनेसिस. कल्चरल जेनेसिस क्या आया? फायर बनाई हमने, उससे जो बायोलॉजिकल चेंज क्या आया? डेंटल आर्केड में चेंजेस आने लगे. जो हमारा फेस का बिल्ड जो पहले बड़ा ही रोबस्ट था, दैट वेंट अ मोर दैट गॉट अ मोर ग्रिसाइल स्ट्रक्चर. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. सो ये जो दोनों कल्चरल चेंजेस और कल्चरल जेनेसिस, सॉरी, बायोलॉजिकल चेंजेस और कल्चरल जेनेसिस है, they are in sync with each other. In a sense, if I bring some sort of change in one part, it will bring the change in another part. Okay, so related to this is very important hypothesis which is known as savanna hypothesis. Same जो मैंने आपको example दी related to bipedalism and all, वो इसमें explain की हुई है. It is very easy. Dense forest थे पहले अफ्रीका वाली साइड में. With evolution क्या हुआ? वहां पे ग्रासलैंड्स आने लगे, या कोई डिजास्टर हुआ होगा, वहां पे ग्रासलैंड्स आ गए. जब ग्रासलैंड्स आए, अब पहले जो वो एनिमल्स थे वो क्वाड्रपेडल थे. क्वाड्रपेडल का नुकसान क्या हो रहा था उनको? कि ग्रासेस वर ऑफ देयर एग्जैक्ट हाइट, सो दे वर नॉट एबल टू सी द प्रे विच दे वांट टू कैच. तो उन्होंने अपने आप को इवॉल्व किया एंड दे वेंट इनटू अ बाइपेडल स्ट्रक्चर पोस्चर. अब जब बाइपेडल
स्ट्रक्चर आया, उससे बायोलॉजिकल चेंज क्या आया? नैरोइंग ऑफ बर्थ कैनाल, उससे बर्थ कैनाल नैरो होने लगी और बेबीज जो पैदा होने लगे वो इमेच्योर पैदा होने के लगे। जब आपने देखा होगा कि जब लाइक इफ वी सी द एग्जांपल ऑफ एन एलिफेंट, एलिफेंट इज क्वाड्रुपेडल, जो इसका बेबी भी पैदा होता है ना, दैट इज नॉट वेरी इमेच्योर, वो मेच्योर पैदा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू मेक इट मोर क्लियरर, इसका मतलब जो क्वाड्रुपेडल होते हैं उनके बेबीज जो होते हैं बिट मेच्योर पैदा होते हैं देन ह्यूमंस, बिकॉज ह्यूमंस आर बाइपेडल। बाइपेडल में क्या होता है, जो बेबीज पैदा होते हैं वो इमेच्योर पैदा होते हैं। ओके, अब जब बाइपेडलिज्म आ गया, मैंने बोला हाथ फ्री हो गए, हाथ फ्री होने से क्या हुआ, टूल्स बनने लगे और टूल से होने लगी हंटिंग एंड गैदरिंग। हंटिंग एंड गैदरिंग होने लगी, उससे कल्चरल इम्पैक्ट क्या आया, मेल टू मेल बॉन्ड और कॉपरेशन बढ़ने लगा। ओके, जब मेल टू मेल बॉन्ड और कॉपरेशन बढ़ने लगा, इसका बायोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या हुआ, पीपल यूज्ड टू कॉन्वर्सेट विद ईच अदर, पीपल वांटेड टू अंडरस्टैंड ईच अदर इन अ बेटर वे। उससे क्या हुआ, एक्सपेंशन ऑफ ब्रेन साइज हुआ। जब एक्सपेंशन ऑफ ब्रेन साइज हुआ, उससे अगेन बायोलॉजिकल ट्रिगर क्या हुआ कि चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स आने लगी। व्हाई? Because the pelvic area of the women went a bit shorter, but the head size increased, which brought difficulty in birth process. Getting my point? I hope इतना जो मैंने बोला वो समझ आ गया। क्या बोला? डेंस फॉरेस्ट से ग्रासलैंड, ग्रासलैंड आया तो बाइपेडल आ गए, क्योंकि उन्हें चार पैरों में दिख नहीं रहा था, वो बाइपेडल हो गए। बाइपेडल होने से क्या हो गया, बर्थ कैनाल नैरो हो गया, नैरो होने से क्या हुआ, इमेच्योर बेबी पैदा होने लगे। बाइपेडल हुआ, बाइपेडल से हाथ फ्री हो गए, टूल्स बनने लगे, टूल से हंटिंग एंड गैदरिंग होने लगी, हंटिंग एंड गैदरिंग से क्या होने लगा, कॉपरेशन बिटवीन टू सेक्शंस और टू और मोर, इट गॉट इंक्रीज्ड। उससे बायोलॉजिकल ट्रिगर क्या मिला कि एक्सपेंशन होने लगा ब्रेन साइज का, उससे क्या हुआ, चाइल्ड बर्थ में प्रॉब्लम्स आने लगी। नाउ इफ आई टेक वन एस्पेक्ट ऑफ बाइपेडलिज्म, बाइपेडलिज्म से क्या होने लगा, हैंड्स गॉट फ्री एज आई टोल्ड यू, स्टोन टूल्स डेवलप, हैंड एक्सेस डेवलप होने लगी, सिविलाइजेशंस बनने लगी। यू नो व्हाई आई से सिविलाइजेशंस वगैरह, आपने महाजनपद का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। विद द एडवेंट ऑफ आयरन, जो फॉरेस्ट वगैरह थे क्लियर होने लगे और उससे जो थी जनपद्स की एस्टैब्लिशमेंट हुई। आई होप यू आर गेटिंग। स्टोन टूल से क्या होने का, एनिमल स्किन रिमूवल होने लगी और उससे क्लोथिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई। आई होप यू गॉट दिस वन। बाइपेडलिज्म से क्या हुआ, हैंड्स गॉट फ्री, the early men used to strike two stones together, which led to the discovery of fire. Fire helps in the protection of early men against animals. फायर से क्या होने लगा, चेंज इन डाइटरी पैटर्न, कुक्ड फूड, ये मैंने आपको पहले भी समझाया, कुक्ड फूड आने लगा। कुक्ड फूड जब आया, pressure on the teeth and jaw decreased. The teeth and the jaws, which were more robust earlier, went into a gracile mode, and there was a change in the dental arcade. Getting my point? Then, change in dietary pattern, with the advent of fire, it brought a change in the dietary pattern. Cooked food हुआ, इन कुक्ड फूड से क्या हुआ, जो भी पैरासिटिक इन्फेक्शंस थी ना वो डिक्रीज होने लगी। जब इन्फेक्शंस डिक्रीज होने लगी तो मोर्टेलिटी रेट जो था पॉपुलेशन के अंदर, दैट डिक्रीज्ड, which led to increase in the population size. Population size जब increase होने लगा, which brought a kind of social organization among different people. उससे क्या आने लगा, the concept of territory arose. I hope ये जो सवाना हाइपोथेसिस थी, it is clear to all. So if you have learned and understood the Savannah hypothesis, the next portion which we'll do, it will become very easy for you people. Why I am saying this? It is exactly, I'll be repeating the previous thing again and again. Nothing is new. If you have done that, you're sorted. Savannah hypothesis was the main thing. If you have learned it, you're sorted.
I hope you're getting it. But for just for the sake of formality and just for the sake कि you people have gone through it, I'll just go once. सबसे पहले बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन. बायोलॉजिकल आ गया यानी कि फिजियोलॉजी वगैरह में चेंज. कल्चरल यानी कि सोसाइटी में क्या चेंज आ रहा है, कल्चर में क्या चेंज आ रहा है. गेटिंग माई पॉइंट. बायोलॉजिकल फैक्टर्स इन ह्यूमन एवोल्यूशन. अगर मैं आऊँ सबसे पहला जेनेटिक एडाप्टेशंस यानी कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन प्राइमरली ऑपरेट्स थ्रू जेनेटिक चेंजेस. ओके, these genetic adaptations can result from mutation के थ्रू होता है. mutations यानी कि change in DNA. ये हम सारा पढ़ेंगे आगे. जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू. ये जो जेनेटिक ड्रिफ्ट है, genetic drift, if I say in a simple language, it is sudden change in a small population by chance. Genetic drift is also known as Sewell-Wright effect. Sewell-Wright effect. इसके दो पार्ट्स आते हैं, एक बॉटलनेक इफेक्ट और एक फाउंडर इफेक्ट. ये हम सब आगे पढ़ेंगे. मैं आपको जस्ट एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दी है. अगर नहीं समझ आया भूल जाओ, कोई बात नहीं. विल डू इट इन लेटर लेक्चर्स आल्सो विद मोर डिटेल. ओके, तो जेनेटिक एडाप्टेशन के थ्रू क्या हुआ कि बाइपेडलिज्म आने लगा, इंक्रीज होने लगा ब्रेन का साइज. ओके, और जो भी फीचर्स थे बॉडी के वो चेंज होने लगे. सेकेंड बायोलॉजिकल फैक्टर है बाइपेडलिज्म. ओके, नथिंग टू डू, जस्ट याद करो. यू कैन राइट कि बाइपेडलिज्म इज अ प्रोसेस in which an organism walks on two limbs, which results in freeing of hands and can be used in making of tools and carrying objects. Getting my point? ब्रेन एक्सपेंशन होने लगा. ब्रेन एक्सपेंशन की वजह से क्या होने लगा, कॉग्निटिव एबिलिटीज आने लगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आने लगी, और सोसाइटी के बीच कोऑपरेशन बढ़ने लगा. डाइटरी चेंजेस आने लगे. ओके, व्हाई आई से डाइटरी चेंजेस आने लगे. चेंजेस इन डाइट इंक्लूडेड इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ मीट एंड डेवलपमेंट ऑफ कुकिंग. जब कुकिंग आ गई उससे क्या हुआ, डेंटल आर्केड मैंने बताया था ना चेंज हुआ. सी, फिजियोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम और टूथ स्ट्रक्चर चेंज हो गया. रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजीज से क्या हुआ, नाउ लिसन मी वेरी केयरफुली. बाइपेडलिज्म आया, उससे जो पेल्विक एरिया था विमेन का दैट रिड्यूस्ड और रिप्रोडक्शन में प्रॉब्लम आने लगी. बर्थ प्रोसेस डिफिकल्ट होने लगा. कल्चरल चेंजेस वेरी सिंपल, टूल यूज. व्हाई आई से बाइपेडलिज्म से टूल यूज बढ़ने लगा. Why I say language and communication, with the evolution of the brain, it resulted in communication skills among the people, and which resulted in social bonds among the society. Social organization, again I said. Art and symbolism acts as an expression for the people. If I say that brain developed, it led to communication, and communication can even be through art and drawing symbols. Okay. Now I say कि अगर बाइपेडलिज्म आया, हैंड्स फ्री हुए, उससे क्या हुआ, टूल्स बने. टूल्स किस में यूज होंगे, एग्रीकल्चर में नहीं होंगे, तो एग्रीकल्चर में सेटलमेंट नहीं होगा. एंड इट लेड टू कल्चरल ट्रांसमिशन. व्हाई आई से अगेन, लैंग्वेज के डेवलपमेंट से टू पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, एंड इफ दे आर फ्रॉम टू अदर सेपरेट प्लेसेस, इट विल लीड टू एक्सचेंज ऑफ आइडियाज. गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस पोर्शन वॉज वेरी इजी. नाउ ये जो पोर्शन है इंटरेक्शन बिटवीन कल्चर, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं यूपीएससी में. हमेशा इंटरडिपेंडेंस पूछ लेंगे बायोलॉजिकल एंड कल्चरल फैक्टर्स की. वो ही चीज है जो सेम मैंने यहाँ भी पढ़ाई है और जो मैंने सवाना हाइपोथेसिस में भी कवर की है. बट अगेन फॉर सेक आई अगेन गो थ्रू इट. सिंपली अगर इंट्रोडक्शन भी पूछेंगे, विल से कि देयर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिटवीन द not relationship, you can say there is a strong synergy
synergy between biological and cultural attributes. Hence, a change in one can bring the change in another. Getting my point? अब biological से कल्चरल एवोल्यूशन कैसे इफेक्ट होगा हमने वो पढ़ना है. वेरी सिंपल. बाइपेडलिज्म इन टूल यूज, सेम वही कहानी. बाइपेडलिज्म होगा, इसमें हमने फ्लो चार्ट्स टाइप भी बना सकते. बाइपेडलिज्म से क्या होगा? हैंड्स फ्री. हैंड्स फ्री से क्या होगा? टूल्स डेवलप्ड. गॉट माय पॉइंट? विच विल हेल्प इन हंटिंग, किलिंग एनिमल्स. स्किन यूज करेंगे तो उससे क्या होगा? क्लोथ्स. गेटिंग माय पॉइंट? देन एनसेफलाइजेशन इन लैंग्वेज. बायोलॉजिकल एवोल्यूशन से क्या हुआ? ह्यूमन ब्रेन डेवलप होने लगा. ह्यूमन ब्रेन के डेवलपमेंट से कॉग्निटिव एबिलिटीज बढ़ने लगी और उससे लैंग्वेज केम इनटू एग्जिस्टेंस. डाइट एंड कुकिंग से क्या हुआ? The development of Homo sapiens were accompanied by changes in their dentition and digestive systems. Okay? अब उससे क्या हुआ कि early humans learned to cook over fire. और जब फायर से कुक होने लगा, मैंने वो बताया कि जो पैरासिटिक थे इन्फेक्शंस वो रिड्यूस होने लगी. यू कैन गिव दैट एग्जांपल हियर. सोशल स्ट्रक्चर एंड कोऑपरेशन. वेरी गुड एग्जांपल. बायोलॉजिकल एवोल्यूशन क्या है? ह्यूमन आर सोशल एनिमल्स एंड आर एबिलिटी टू कोऑपरेट एंड लिव इन सोशल स्ट्रक्चर्स हैज बायोलॉजिकल underpinnings such as capacity of empathy, theory of mind, and ability to form and maintain social bonds. उससे क्या होता है? It helps in the cultural evolution. यानी कि people get to engage with each other, cultures का exchange होता है, language का exchange होता है, you get to witness a huge lot of cultural transmission. I hope you're getting my point. Cognitive abilities and innovation से क्या होगा? I told you earlier also. With evolution of brain, with the change in structures of brain, led to the expression among people, and the best form of expression was art and symbolism. You can give that example. Getting my point? Now, हमने तो ऊपर इतनी सारा पढ़ लिया कि बाइपेडलिज्म से टूल यूज, यानी कि ब्रेन डेवलप हुआ, लैंग्वेज, डाइट, कुकिंग के बारे में, सोशल स्ट्रक्चर एंड कोऑपरेशन के बारे में, कॉग्निटिव एबिलिटीज. वो था कि बायोलॉजिकल से सोशल इफेक्ट कैसे आ रहा है. अब हम करेंगे, सॉरी, कल्चरल इफेक्ट कैसे आ रहा है. अब हम करेंगे कल्चरल से बायोलॉजिकल इफेक्ट कैसे आ रहा है. पहला, सबसे पहले एग्जांपल तो डाइट एंड न्यूट्रिशन. आप ना पहले वाले को उल्टा भी कर सकते हो, यानी कि अगर आपको पॉइंट्स दिमाग में आ ही नहीं रहे हैं, व्हाट यू कैन डू इज ये वाला ये पहले लिख दो और बायोलॉजिकल वाला बाद में. इन दैट ये ये ट्रिक तभी यूज करनी है इफ यू आर नॉट एबल टू रिकैप्चुलेट एनी ऑफ द पॉइंट्स. But if you have understood the Savannah hypothesis, you will not forget the links between cultural and biological evolution. It will be very easy for you to write in the exam also. And if you have, if you even don't know anything, and if you have just simply listened to the lecture of mine, you'll be able to write the question very easily. Now, let us come back to the cultural and biological effect. How cultural change can bring a biological evolution. डाइट एंड न्यूट्रिशन में पहले भी बोला था मैंने. जब फायर आई, फायर से कुक्ड फूड होने लगा, विच ब्रॉट बायोलॉजिकल चेंज. क्या आया? डेंटल आर्केड में. ठीक है. डाइजेशन में चेंज आया, मेटाबॉलिज्म में चेंज आया. गेटिंग माय पॉइंट? अब सपोज पहले जो सोसाइटीज थी, अगर सपोज वो पहले मीट ज्यादा कंज्यूम करती थी, विद टाइम क्या हुआ? जो सोसाइटी वेंट टू अ मोर हर्डिंग टाइप, यानी कि एनिमल्स वर बीइंग यूज्ड. एनिमल्स वर बीइंग यूज्ड तो मिल्क का कंजम्पशन होगा. तो पहले जो लैक्टोज इनटॉलरेंट थे, उनमें जीन्स आने लगी लैक्टोज टॉलरेंस की. ये भी इंपॉर्टेंट है. गेटिंग माय पॉइंट? पैथोजन एक्सपोजर एंड इम्यूनिटी. कल्चरल एवोल्यूशन क्या हुआ कि पीपल started migrating from one place to another. So with the migration, what happened? There was a huge spread of diseases, right?
which was due to cultural behavior like hygiene कम होगी, burying rituals होगा या medicinal plants के exposure की वजह से there used to be an increment in diseases. तो biological evolution क्या आया कि with evolution there जो immunity थी there the immunity among the individuals started to increase to resist themselves from the diseases. Getting my point? रिप्रोडक्टिव प्रैक्टिसेस क्या हुई में जो कल्चरल एवोल्यूशन क्या आया कि कल्चरल नॉर्म्स एंड प्रैक्टिसेस सराउंडिंग मैरिज फैमिली साइज मेट सिलेक्शन कैन इम्पैक्ट रिप्रोडक्टिव पैटर्न्स आल्सो. गेटिंग माय पॉइंट? जैसे आपकी मैरिज हुई है, फैमिली कैसी है, किस टाइप की है, वो आपका ऑब्वियसली वो रिप्रोडक्टिव पैटर्न जो है वो इफेक्ट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल कल्चरल preferences for certain traits in mate can influence the mate choice. बिल्कुल करेक्ट. Over generation, cultural preferences for specific trait can influence the genetic makeup in the population. To be very simple, इतना हम complex नहीं करते हैं चीज़ों को. ये कि suppose मैं एक न्यूक्लियर फैमिली में रह रही हूँ, तो न्यूक्लियर फैमिली में अगर रह रही हूँ तो मेरा माइंडसेट जो होगा चिल्ड्रन के रिलेटेड वो डिफरेंट होगा, राइट? मे बी आई बी लाइक कि फैमिली स्मॉल है, कोई देखने वाला नहीं है, तो आई get into the reproduction a bit later. समझ रहे हैं what I'm trying to say? टेक्नोलॉजी एंड एनवायरमेंटल एडेप्टेशन में क्या आया कि वही चीज आ गई कि जब टूल्स आने लगे, टूल से क्या होने लगा, किलिंग ऑफ एनिमल्स, स्किन, तो उससे क्लोथ्स का, वार्म क्लोथ्स का आने लगा. ठीक है, तो जब वार्म क्लोथ्स आने लगे, वार्म क्लोथिंग आने लगी, तो पीपल, तो आई वॉज एक्सप्लेनिंग कि टूल्स की वजह से किलिंग होने लगी, किलिंग की वजह से स्किन, क्लोथ्स आने लगे, तो जो बॉडी का एडेप्टेशन था टू द कोल्डर क्लाइमेट्स, लाइक कि थिक बॉडी हेयर वगैरह, वो रिड्यूस होने लगे, वो रिड्यूस होने लगे. समझ आ रही है? क्योंकि क्लोथ्स आ गए, तो वो जो एडेप्टेशन थी टू द कोल्डर एनवायरनमेंट, दैट there was a certain kind of reduction in that. Getting my point? और सोशल स्ट्रक्चर एंड कोऑपरेशन, यानी कि कल्चरल एवोल्यूशन अगर आया, क्या कल्चरल एवोल्यूशन आया, लाइक सोशल ऑर्गेनाइजेशन या कोऑपरेशन, तो उससे जो वैल्यूज थी, ट्रेट्स थे ऑफ एम्पैथी, कोऑपरेशन एंड लीडरशिप, इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. समझ आ गई? आई होप ये वाला पोर्शन जो था, जो मैंने आज सबसे पहला लिया ऑफ द फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, इट इज क्लियर टू यू पीपल. ठीक है, and after this we'll study the pre-Darwinian theories, the जिसमें हम लेमार्किज्म वगैरह सब पढ़ेंगे, and then we'll study the Darwin theory, and then the post-Darwin theory will study. Okay, वो हम आने वाले lectures में हम करेंगे. I hope this one is clear to all of you and I have made you understand in a very layman language. So today I'll end it with this lecture just because I don't want to overdo the things in the beginning. Right? I want to go very slow with physical anthropology because it is a quite technical subject and I want you people to learn here only. And I don't want कि एक बार हो गया बस, close your books, just revise between 1 or 2 days and you're good to go. So answer writing करते रहा करिए, जैसे जैसे topics खत्म होते हैं, just see the PYQs and go through them and make a notebook in which you're writing all of your PYQs so that before the exam you can have a glance over all of them, right? We'll practice the PYQs also. I have done. I'll show you some of the copies which I have written and I'll show you. So I think today I should end with uh, today I should end with this lecture. And before going, let us do the drill of liking, sharing, and subscribing to my YouTube channel so that we can all excel in anthropology. Bye and take care.